Hi guys, welcome to my channel Reena Thomas, and in today's video I'm going to help my brother with his farewell outfit. So yeah, it's going to be a really interesting video. Let me just quickly call him. आ गया तड़ा. Okay, that's Aditya. We call him Adu at home. Hi guys, what's up? कैसे हो आप लोग? बस करो. Okay, so क्या चाहिए तुझे farewell में? Like क्या requirements है तेरे? मैं आया हूँ इसके लिए. आप but- प्रोफेशनल हो ना? So यार क्या requirements है तेरे farewell outfit के लिए? मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि मेरे को ब्लैक सूट नहीं पहनना. Black suit नहीं पहनना. नहीं. Okay. ब्लैक सूट नहीं पहनना और फॉर्मल शूज तो बिल्कुल नहीं पहनना क्योंकि आधे से ज्यादा दिन फॉर्मल शूज ही पहन के आता है. तो क्या पहनेगा चप्पल? नहीं. वाइट शू अच्छा ऑप्शन लगा मुझे. तो white shoes. Wow. बिजी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ. चलो बस. मम्मी थी? नहीं. और फिर मुझे कैजुअल लुक चाहिए जो मेरे वाइट शू के साथ जा सके. तो white shoe देखो कंपलसरी पहनना है. हाँ, क्योंकि वो अच्छा मतलब उसमें लुक आता. अच्छा ओके देखो. ओके. पिंक ब्लेजर पहनेगा? पिंक ब्लेजर ये तो बहुत ज्यादा हो गया. पिंक ब्लेजर क्योंकि कॉलेज में बहुत हाई फैशन हो जाएगा. ओके ठीक है. तो बेसिकली देखो कैजुअल ब्लेजर लुक चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए और कुछ ऐसा जो तेरे सिर्फ वाइट white शूज shoes में हाथ डाल सके. हाँ. ओके ठीक है. तो चलो we'll figure that out. So I'll tell you why he's come to me for his outfit. मेरे कपड़े तो वो पहनेगा नहीं for sure. It's just that I'm a stylist by profession, so I have a lot of outfits in my stock which I use for my shoots. So yeah, I can pull out something for him. Let's see क्या मिले उसके size में और जो उसको पसंद है, because नखरे तो बहुत है भाई साहब. बहुत ज्यादा नखरे मेरे. Yeah, so let's go. Okay. So sorry for the background noise. और बाजू वाली बिल्डिंग में काम चल रहा है, नीचे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और दूसरे रूम में मेरी बेबी बहुत आवाज़ कर रही है, तो प्लीज़ कोऑपरेट. So yeah, कपड़े तो आ गए हैं. I've got 2 suits in his size, maroon and blue, and then different things to make combinations as well. अगर उसको full suit नहीं पहनना है. That's my daughter Eva. Baby, don't touch that. Finally उसको हमने आज़ाद कर दिया. She was becoming too cranky sitting in the room. So let me just quickly show this to Adu. आ गया? आ जाओ. हाँ. देखो. So these are the 2 suits in your size. तो बताओ कौन सा पहनना है. ब्लू वाला तो नहीं पहनूंगा क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट सभी दोस्त तो ब्लू पहन रहे हैं, तो आई विल गो विद मरून. भाई तेरे बहुत प्रॉब्लम है. फॉर्मल शूज नहीं पहनना है, ब्लू नहीं पहनना है, ये पहन रहा है, मतलब तू अभी एक चूज किया ना मैंने. ठीक है. तो मरून सूट या और वाइट शूज तो तू लाया ही नहीं जिसको पहनने के लिए तू मतलब. मैंने सोचा मैंने बैग में रखा, मतलब मैं भूल गया घर पे. ठीक है. So a quick tip for all you guys out there. Next time you have a formal event to attend, don't go bonkers looking for a new suit. Just use what you already have in your wardrobe, guys, but learn to combine it differently so it looks different every time you wear it. And if at all you're planning for a new suit, choose a versatile fabric so you can combine it with multiple things. Now let's just see the 5 different ways I styled this maroon suit on my brother. Correct, guys? Chalo fir. चलो. So for the first look, I used just the blazer with a contrast blue chinos, and to put the whole look together, I've added a black tee. Also, the black tee has buttons in front. It just adds on the details, guys. However, you can also team it with plain regular t-shirt. For footwear, he wants to wear his white shoes, but I feel a brown casual shoes or boots will look amazing with it. Next, we have used the full suit but ditched the shirt and wore it with a quirky t-shirt. It just adds so much fun to a regular suit. You can also team it with a plain t-shirt if prints is not your game. However, this is the best way to team your suit to wear a casual white shoes if you want to let go of the formal shoes. For the third look, we teamed the blazer with our very good friend black jeans. And instead of a plain tee, I went for stripes to deck up the whole look. Now for the next 2 looks, we have used the items from look 1, 2, 3 and combined it differently. Here, we have used the combo from look 2 and changed the bottoms and wore jeans. As you see in all the looks, I have only used t-shirts to make combinations. That's just because my brother was very adamant on wearing t-shirts. But you can certainly use shorts as well, guys. And for look 5,
This is also one of my fave. We used the look one combo and changed the tee to white from black. So that's about all the looks I tried on him. I'll put more videos on how to make combinations and I will use shirts as well. So do subscribe to my channel and wait for that one. In fact, let's do this. The day I reach 500 likes on this video, I will put another video. So yeah guys, like this video right now and काम पे लगाओ मुझे. हमारा ट्रायल तो हो गया खत्म. आई होप इसमें से आपको भी कुछ स्टाइलिंग टिप्स मिले हो. वैसे मुझे तो मेरा फेवरेट लुक पता है. तुझे कौन सा वाला लुक पसंद है? अच्छा रुक रुक रुक, साथ में बोलते हैं. मैं मेरा बताती हूँ, तू तेरा बता. ठीक है? लुक लुक Two. 1. ओके ओके, दोनों को अलग अलग लुक पसंद आया है. तो अच्छा, तो ये तो हो गई हमारी चॉइस. तो मुझे आपकी चॉइस जानना है. तो आप कमेंट करना क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा. तो प्लीज So yeah, do comment down below and let us know कि आपका favorite look कौन सा था इसमें से. And that's it for the video. We will come back with lot more fun videos. So do hit like if you like this video. Subscribe to my channel and share भी कर लो. चलो. Bye guys. Bye YouTube. Bye. Bye YouTube.